Hello everyone. So the last division of kingdom plant is angiosperms. Angiosperm is derived from two words. First one is angio, second one is sperm. Angio means covered, sperma means seed. That means a type of plant in which seed is covered by something. So what is there which covers here seed? That is fruit. That means fruit bearing plants are angiosperms. Gymnosperm में हमने क्या पढ़ा था? It was uncovered seed, naked seed. And in the angiosperm what is there? The seeds are covered by fruit. Okay. So fruit bearing plants are coming under angiosperms. Now if we talk about the reproductive part, plant का reproductive part क्या? Flowering plant का, fruit bearing plant का, it is flower. Flower is the reproductive part. And in the flower there are two organs, two parts, stamen and carpel. Those are basically the reproductive part of a plant. So flower में क्या? Stamen. Stamen is the male reproductive part and there is carpel. Carpel is the female reproductive part. Carpel क्या है? Female reproductive part of an angiospermic plant. So angiosperm में flower होंगे, angiosperm में fruits होंगे और उसी flower के अंदर reproductive parts होते हैं. Now the pollen grains found in the anther of stamen. Stamen के ऊपर का part होगा anther. The structure of stamen will be like this. Like this. This part is called anther and this part is called filament. Filament is a thin tube-like structure which holds anther at the top and anther के अंदर क्या होगा? Inside the anther pollen grains are found. Pollen grains क्या है? हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट जिससे मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं. तो जिम्नोस्पर्म में क्या था कि pollen grain and we read about the ovules जो कि ovules uncovered थे, covered नहीं था किसी चीज से. And here is also ovule is found, but ovules are covered. कहाँ पे ये covered है? कहाँ पे होते हैं? Ovary के अंदर. Where is ovary found? In the carpel. Carpel के अंदर ovary. So if we discuss the structure of carpel, it will be like this. Carpel का structure क्या होगा? Something like this. And this part is called ovary. And inside the ovary there are basically ovules are found. कहाँ पे ovules? Ovary के अंदर. These are what? Ovules. ठीक है. So ovules are found inside the ovary and कुछ भी naked नहीं है यहाँ पे. कुछ भी naked नहीं है. Everything is covered. Okay. And ovules after the fusion of gametes क्या होता है? Fusion of gametes कैसे होगा? Anther will produce the pollen grains and pollen grains will reach the stigma. Top part of the carpel or pistil is called stigma. यहाँ पे आ जाएगा pollen grains. Then it will go downwards towards the style. Tube-like part of कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल और पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल. यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्यूब फॉर्म करके नीचे जाएगा एंड ओव्यूल में जाके फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होगा. पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट एंड ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट एंड देयर विल बी फ्यूजन टेक्स प्लेस. एंड आफ्टर फ्यूजन व्हाट हैपेंस? दीज ओव्यूल्स turned as seed. Ovules become seed after fertilization and ovary becomes fruit after फर्टिलाइजेशन. क्या बन जाता है? ओवरी फ्रूट बन जाता है. अब देखो आप फ्रूट, ओवरी बन गया फ्रूट, ओव्यूल बन गया सीड. सो सीड इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट. ओके. सो सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट. द सीड इज नॉट naked. Seed is covered. Clear? Now if we talk about habitat, the widely spread plants are angiosperms found everywhere. Terrestrial, aquatic, all kind of aquatic plants comes under the angiosperms and many different kind of terrestrial plants also comes under angiosperm. मतलब angiosperm hills पे भी होंगे, desert में भी होगा, grassland में भी होगा and aquatic में marine as well as fresh water. Everywhere
angiosperms are found. If we talk about the range of the smallest and biggest one, the smallest one is Wolffia. सबसे छोटा angiosperm क्या? Wolffia. And almost microscopic. The Wolffia is almost microscopic. And largest is Eucalyptus, जो सबसे लंबा है, हाइट सबसे ज़्यादा जिसकी है, लेंथ सबसे ज़्यादा, that is almost 100 meter Eucalyptus. Now if we talk about what are the economic importance, हमें ये देता क्या क्या है, तो it gives us food, of course food का source ही angiosperms है, because यहाँ fruits बन रहे हैं इसलिए, because यहाँ पे seeds बन रहे हैं, तो seeds are also we use as food, and fruits are also being used as food. So major source of food, main source of food you can say are angiosperms. Then medicinal use also, lots of medicines are manufactured by using different angiosperm plants, its roots, its stem, its leaves, branches, and the you can say bark of the tree, that is also as a fodder also it is used. Fodder means food for the cattle. Fuel also it is used. And so अब तक जो features पता चले वो क्या चले, angiosperms are the flowering plants, flower bearing plants, fruit bearing plants, and the seed is covered in the fruit. Now if we talk about its classes, there are two classes of angiosperm. Number one is monocotyledon, number two is dicotyledon. What is this mono, what is this di? Mono means single, di means two. What single, what two? Cotyledons. चलो एक सीड का स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं. सपोज दिस इज अ सीड ऑफ किडनी बीन, राजमा का सीड है, शेप है. अब अगर इसे आप स्वेलअप करोगे वाटर में तो इट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. आप 2 इक्वल हाफ में तोड़ सकते हो, लाइक दिस. यू कैन ब्रेक इट, है ना, 2 इक्वल पार्ट में आप इसे तोड़ सकते हो. सो the type of seed which can be broken into 2 equal halves are dicotyledons. Okay, कौन से एग्जाम्पल हो गए, जितने भी पल्सेस हैं, पीज, पीनट्स, एंड जितने भी आप इस तरह के सीड इमेजिन कर सकते हो, ग्राम, वाइट ग्राम, ऑल दोज आर डाइकोटिलेडन्स. बट अगर मोनोकोटिलेडन की बात करें, क्या राइस के सीड को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, वीट के सीड को? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब the 2 equal half can't be given by the monocotyledonous seed like rice, like wheat. Okay, so there are two classes which are monocotyledon, dicotyledon. We will discuss more features of monocotyledon and dicotyledon in next video. Till that, wait.